Good morning to all the students and the professors and the faculty of JUT. And I'm so glad that you are here. And I'm delighted to say that this is the sixth session for the internship interaction. It is part of the advanced entrepreneurship class, but I'm so glad that we did this because we get to hear from different students, and we heard about the projects also. So today is the last class and then a last session for this. All the recordings are there. I've been sending the URL of that recording, so you can go through those recording, and at least it is worth going through that so that you'll get the information which you may be looking for. Okay, so today I want to I'll go briefly with the 7 habits of highly effective people by Stephen Covey. सात जो हैं, तो स्टीवन कवी ने he wrote that book way back, and those so I'll share those 7 habits. Then internship interactive session. We are so thankful today. We have a Himanshu Kushwaha. Himanshu is from Palamu GEC, and he will share his experience. He went through the internship, and then also he went through the interview process for the placement, and I'm so glad that he has agreed to share his experience, what helped him out, and what are the things which we could do differently so that it can help all the future students. Then we'll also have the students who have the projects. They will be presenting their projects, and we'll go through a discussion of that. After that, we have open forum, so anybody can raise their hand and ask any question pertinent pertinent to the subject matter, right? So remember, हम लोगों ने कहा था smart. S is specific, M is measurable, A is achievable, and R is relevant. सो ओपन फोरम में ये रेलिवेंट क्वेश्चन आपको पूछना है, रेलिवेंट विद दिस एंटरप्रेन्योरशिप, रेलिवेंट विद इंटर्नशिप, रेलिवेंट with the interview process. Okay? So that's the open forum. Then of course we'll have a Q&A. So with that, I'll just go switch on to to 7 habits of highly effective people. We know, again, I will just say this ताकि सब याद हो जाए, सबको जहन में लग जाए, इम्प्रिंट हो जाए कि डिग्री इज द फ्लोर एंड क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इज द सीलिंग. नोइंग द फॉर्मूला इजंट गुड इनफ, क्योंकि सारी दुनिया के पास वही इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास है. So curiosity and creativity, that's what we have to do. This is and then of course we have to getting ready for the employable graduate. We talked about it, AI, ये जान से एकदम जरूर सी एक make it a second habit, एकदम कि चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, एक्स, जो भी है, because that's what you have to know. Artificial intelligence, you have to get used to it. Okay. Creativity and curiosity based economy है. So ये कोई ठीक है, आपको फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन they will look for the person who's interviewing, वो ये जानेगा कि आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज का आप क्या कर सकते हैं. हाउ कैन यू हेल्प माई कंपनी? आई एम गोइंग टू हायर यू. कैसे आप हेल्प करेंगे? मैं हूं टाटा में, आप मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए, तो आप क्या करेंगे टाटा के लिए? दैट्स वाई you use curiosity and creativity. And then your skill set, critical thinking, right? Excellent storytelling, empathetic leadership. दूसरों के हमेशा स्ट्रेंथ के साथ काम करना है. और फिर
ये जो अगेन वी टॉक्ड अबाउट माइंडसेट, अबंडेंस एंड एक्सपोनेंशियल ये होना चाहिए। और कस्टमर इन सेंटर हर समय, हर समय। जैसे आप अगर इंटरव्यू के लिए आते हैं तो आपका कस्टमर कौन है? आपका कस्टमर है जो आपका इंटरव्यू ले रही है, या वो कंपनी है, वो आपका कस्टमर है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और सवाल पूछें। जब आप सवाल पूछेगा तभी वो, देन सवाल पूछने पर व्हाट दे आर सेइंग, ये आपके जो जो इंप्रेशन दे रहे हैं दूसरे को, वो दे रहे हैं कि यू आर अ क्यूरियस पर्सन, आप जिज्ञासु हैं, एंड यू आर क्रिएटिव पर्सन, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चंस। दैट्स व्हाट यू डू। और फिर हाइपोथेसिस, तो जब आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो यू विल क्रिएट लॉट ऑफ हाइपोथेसिस एंड कीप ऑन लुकिंग फॉर अनमेट नीड। और अपना मेंटर मेंटर रखना जरूरी है मार्गदर्शक के लिए। सो नाउ कमिंग बैक टू हैबिट, फर्स्ट हैबिट इज द प्री बी प्रोएक्टिव। तो इसका मतलब है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। कोई भी चीज के लिए टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं अपना समय जो जो भी यूज कर रहा हूं, क्या मैं वो अपना समय इफेक्टिवली यूज कर रहा हूं? क्या ये मेरे को हेल्प कर रहा है मेरी ऑब्जेक्टिव में, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्या उसको अचीव करने में ये हेल्प कर रहा है? So realize that your behavior is a function of your decision, not your condition. आपका वातावरण क्या है, that doesn't matter. लेकिन आपका बिहेवियर क्या है, that's what matter. Behavior means your 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 curiosity to learn, your curiosity to do, या what जो भी आपने कमिट किया है उसको करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए। देन सेकंड इज बिगिन विद एंड इन माइंड। तो जो भी काम शुरू करें आपके कि मैं इसका अंत क्या चाहता हूं या चाहती हूं, उसको क्लियरली स्पेसिफिक, स्मार्ट का एस, राइट, स्पेसिफिक कि क्या मैं करना चाहता हूं, कीप दैट वेरी क्लियर, बिगिन विद एंड इन माइंड। एंड बाय डिफाइनिंग योर डीपली हेल्ड वैल्यूज एंड लॉन्ग टर्म गोल जो भी है। तो अभी अभी आपका क्या गोल है? अभी आपका गोल है, यू हैव टू लर्न मैक्सिमम, यू हैव टू लर्न मैक्सिमम, एंड यू हैव टू अपना जो माइंड सेट है, उस माइंड सेट को ऐसा रेडी करना है ताकि आप क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इकोनॉमी है उसके साथ आप मैच करें। एंड देन पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अब आप जब काम करेंगे तो पहले आपको क्या करना है, जो आपको प्लान बनाना है, पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, ये करेंगे, दैट्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, and which is the first one you will do. So effective people spend most of their time on important things. They don't dare spend time on somebody else's important things, right? So you have to, जो आपको काम दिया गया है, जो आपके दिमाग में जो काम है, जो आपने गोल अपना बनाया है कि मैं ये करूंगा या करूंगी, उस पर हमेशा ध्यान देना जरूरी है। सो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कि जैसे कभी कॉल आ गया, दोस्त का कॉल आ गया कि भाई चलो ना आज मूवी देखने चलते हैं, और यहां पर यू हैव टू कंप्लीट योर असाइनमेंट जो कि आपको मिला था, जो जरूरी है कंप्लीट करना। सो विच विल बी योर प्रायोरिटी? फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड देन थिंक विन विन। जब आप किसी से नेगोशिएट करेंगे, right? अब जैसे दुकानदार से खरीदारी में जाते हैं, आप उससे पैसों के बारे में आप पूछते हैं, ये बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, ऐसे बात करते हैं उससे। तो जब आप खरीदारी से जब खरीदते हैं कोई चीज, तो ऐसा कीजिए ताकि दोनों पार्टी उसमें जीते। ये नहीं कि एक आदमी जीते और दूसरा जो पार्टी है वो एकदम दे गेट लॉस। तो अब जैसे कोई सामान खरीद रहे हैं, आप सामान खरीद रहे हैं, आप उसको बोलो ये बहुत महंगा है, द पर्सन विल से सर ये इतना है, देखिए सर मेरे तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी है, एंड दैट पर्सन शेयर्स दैट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी है, प्लस उसको थोड़ा सा प्रॉफिट भी बनाना है। दैट इज द मिनिमम थिंग विच ही हैज टू, विच यू विल हैव टू पे, एंड विच यू शुड पे।
और फिर क्योंकि जब आपने वो सामान खरीदा तो आप उस सामान में और वैल्यू ऐड करके उसको और हायर प्राइस में बेचेंगे। तो क्या हुआ कि आपने जिससे सामान खरीदा वो भी जीता, और आपने जो सामान बनाया वो हायर प्राइस में बेचा, आप भी जीते। तो ये विन विन सिचुएशन है। हमेशा ऐसा करना चाहिए। सीक एंड देन सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, दैट मीन्स पहले आप दूसरों की बात समझिए। ये जो मैंने देखा है कि जनरली हम लोग बहुत उत्सुक हो जाते हैं, कोई जो कह रहा है, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और उसको जवाब देने के लिए अपने दिमाग में हम लोग बहुत उत्सुकता दिखाते हैं। वो उत्सुकता मत दिखाइए। अपने थॉट, अपने विचार, उसको जो दूसरा जो कह रहा है उसको पूरी बात कहने दीजिए। अब पूरी बात समझिए उससे, और फिर उसके बाद उसका जवाब दिए। क्योंकि हो सकता है कि जो वो बात कह रहा है अल्टीमेटली वो यही बोला कि हम आपके साथ एग्री करते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि यू सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन बी अंडरस्टूड। तो दूसरे की बात सुन के और तब आप उसको वापस जवाब दीजिए कि देखिए आपने ये कहा, इससे तो मैं टोटली एग्री कर रहा हूँ, लेकिन इसमें जो थोड़ी सी कमी है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा नुकसान थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। सो मे बी ये डिज़ाइन को थोड़ा सा ऐसा चेंज कर देते हैं या कुछ एक्शन ले लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट द रिलेशनशिप विल गो, राइट। सो अब जैसे अगर आप जाएंगे, द बेस्ट बेस्ट थिंग इज कि आप जाते हैं कि ये अ, जैसे जॉब के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अब वो पूछेगा कि भाई आपको कितना कंपनसेशन चाहिए, है? तो आप उसका जवाब कैसे देंगे, कितना कंपनसेशन चाहिए? तो आपने क्या किया है कि आपने आपने रिसर्च की है कि जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो इस डिपार्टमेंट के हैं, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो इतनी है। मिन और उनका जो 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 बेल कर्व है, बेल कर्व ऐसा है, यू विल नो दैट। मिन एंड मैक्स आपको पता है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपको पता है। सो व्हेन यू गो विद ऑल दैट इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि आपको कौन सी कैसी सैलरी चाहिए, राइट। दिस दैट्स हाउ यू डू। एंड नेक्स्ट इज सिनर्जाइज। सिनर्जाइज के का मतलब ये हुआ कि आप मिलजुल के काम करें। मिलजुल का मतलब है कि आपका जो टैलेंट है, उसको हमेशा आप आगे रखिए और व्यक्त कीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। और फिर सब मिलके, और दूसरे के विचार, आपकी टीम में दूसरे लोग होंगे, उनका भी विचार होगा, और हो सकता है कि उनका विचार डिफरेंट हो, बट थिंक अबाउट दिस। उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में थोड़ा उनके विचार के बारे में थोड़ा सा थिंक अबाउट इट, कि उसके विचार से करने से आपको व्हाट अफेक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन योर प्रोजेक्ट। तो सिनर्जाइज जब आप मिलजुल के करते हैं, तो यू विल रियलाइज कि जो प्रोजेक्ट जब होता है वो बहुत बढ़िया होता है जब सब मिल के टीम। अब जैसे उस दिन प्रोफेसर रॉय कितनी अच्छी बात बोले कि वो फुटबॉल, वो इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा वर्ल्ड कप में, देख रहे हैं और किस तरह 11 के 11 खिलाड़ी किस तरह आपस में बॉल पास करते हैं, गोलकीपर है और बाकी 10 खिलाड़ी कैसे कैसे बॉल पास करते हैं, टीम वर्क, सिनर्जाइज। ओके। और लास्ट है शार्पन द सॉ। ये मतलब हुआ है कि अपने माइंडसेट को ठीक रखिए, माइंडसेट में हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। अब एक्सरसाइज कीजिए हमेशा, मेक श्योर वॉक इन द मॉर्निंग एंड एक्सरसाइज कीजिए, आपका दिमाग एकदम फ्रेश रहेगा। खाना बढ़िया खाइए और फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर मेंटली रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, प्लानिंग, सोशल इमोशन, ये सब मेक मीनिंगफुल कनेक्शन। Okay, so that's what these are the 7 habits of highly effective people. And I suggest कि अब आप जाके
ये इसमें क्लाउड में जाके या किसी भी एआई में जाके आप उनसे पूछिए हर हैबिट के बारे में, एंड डू दैट, और उसको आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो ये हैबिट मैंने करीबन 30 साल पहले मैंने पहली बार मैंने क्लास अटेंड की थी, 30-35 साल पहले। एंड इट वाज, एंड आफ्टर दैट इट बिकेम माई, मेरा वो मंत्र बन गया। तो दैट बिकेम, दैट रियली हेल्प मी आउट अ लॉट, अ लॉट, अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को, पॉजिटिव माइंडसेट, गेटिंग द पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव माइंडसेट करेंगे तभी आप, only then you'll be creative, you will have the creativity and your curiosity will be there. What another thing is, एक मैं कहना चाहता हूँ, हमेशा आप अपने मेंटोर को, यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ मेंटोर, और अपना जिसमें आपको जरूरत है उस उसमें आप अपना मेंटोर ढूंढिए। और हर बार जो मेंटर होता है वो बदलता रहता है। अब देखिए, जब हम लोग पहली क्लास में गए या किंडरगार्टन में गए तो उस समय मेंटर कोई और था। फिर उसके बाद हम लोग 8th में आए तब मेंटर दूसरा है। फिर उसके बाद 11th पास किए तब मेंटर दूसरा है। फिर इंजीनियरिंग में आप पढ़ रहे हैं, यू हैव अ डिफरेंट मेंटर। So make sure that keep on looking for the different mentors, proper mentor at the same time. So now coming back here, so what I would do is, Professor Roy, on the sequence of the events, can you comment on that? And I think हम लोग को सबसे पहले ये करना चाहिए, in my mind, सब बच्चे लोग, irrespective of how many internship you took, but you did register for the grassroots level of internship. And अगर आपने इसको seriously लिया, you must have gone to the area where you were assigned. और आपने पता किया होगा कि उस एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, कौन किस चीज पर काम कर रहा है जो इम्प्रूव, क्योंकि जो भी इम्प्रूव कर रहा है वर हिज प्रॉब्लम। एंड अगर आपने ठीक से किया है, यू हैव अंडरस्टूड, you have collected data and you have understood their problem. You have seen the solution that these villagers have put into place. अब आपके पास इतनी solution, problem सब कुछ है, अब उसको आप एक प्रोजेक्ट को आप एज एन इंजीनियर के हिसाब से आप देखें and see what value you can further add to that project to make it more successful. क्योंकि यही आपका काम था, this was your assignment, but take this assignment to the next level. उसके साथ जिसने भी डेवलप किया है गांव में, उसके साथ मिलके आप इस प्रोडक्ट को या इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाओ, and you will see how much you are going to gain in your knowledge. क्योंकि all of a sudden जो चीज आपने सोची नहीं है उसको आप करना पड़ रहा है, and that is your success. And मैं तो चाहता हूं कि सब बच्चे जो भी ग्रासरूट लेवल में काम किया है, they should speak about some of the unique thing that they have observed and most probably take this project to the next level. तो एक एक बच्चे को सामने आके you must tell your story, what you like and how you will make a difference in the life of those farmers. So please don't hesitate, raise your hand. We would like to hear your stories. okay, very good, thank you. And Professor Roy, another thing which I suggest that a lot of students, they did not get chance to go out and get the internship. So, but they got it at their own college. So, can they also share their कि lab में, वो तो lab में काफी काम किए, right? So, can they should Absolutely. Anything that they have learned from their internship, this is the opportunity to
शाइन दोस टू अस। आप उसके बारे में बताइए सबको, because we like to hear these stories, and these are the things that you are going to use in your interview, क्योंकि आपको इंटरव्यू उस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए जहां पे आपकी नॉलेज हो, जहां पे आपका एक्सपीरियंस हो, एंड व्हाट कैन बी अ बेटर एक्सपीरियंस देन एन इंटर्नशिप। थैंक यू। सो प्रोफेसर रॉय ने कहा कि अगर आप कॉलेज में भी गए हैं, जैसे कुछ बच्चे बीआईटी सिंधरी में जाके इंटर्नशिप किए या वहाँ की लैब में, और कहीं कहीं पर, तो आप वो भी कॉलेज में, अपने कॉलेज जीईसी पलामू में भी आप किए हैं, तो यू डू दैट, शेयर शेयर दैट विद दैट। डॉक्टर मुरली मनोहर। Yes, sir. Yes, sir. Yeah, so can you add, would you like to add some more things so that students have guideline कि क्या करना है? यस सर। अगर स्टूडेंट जो है जहाँ भी इंटर्नशिप करने के लिए गए हैं, उन्हें जो है उन्हें जो भी ऑब्जर्व किया है, जो भी प्रॉब्लम उन्होंने ऑब्जर्व किया, कंपनी से इंटरेक्ट किया, या जो ग्रास रूट इनोवेशन में गए, तो जो भी यूनिक उन्हें इनोवेशन लगा, ठीक है, तो जिसका अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, उसको वो एज ए स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको क्योंकि मुझे कुछ कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी सर, तो वो बता रहे थे कि बहुत ही यूनिक यूनिक चीज जो मतलब हम लोगों को नहीं पता है, या मार्केट में लोगों को बहुत अधिक उसके बारे में आइडियाज नहीं है। जैसे कुछ स्टूडेंट बता रहा था कि जो जलकुंभी होता है, जलकुंभी से बहुत सारे ऐसे मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो मतलब जैसे डलिया हो गया, या और इस तरह के बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है। लेकिन हम लोग जनरली जलकुंभी को मानते हैं कि हाँ वो जो है वेस्टेज चीज है वो, लेकिन उस वेस्ट से भी जो है वो मतलब कुछ यूनिक बना रहे हैं। तो उस चीज को ऐसा अगर कोई ऑब्जर्व किया है, तो उसको एज ए स्टार्टअप, वो स्टार्टअप आइडियाज वो कर सकता है कि उसको प्रमोट करके, उसको आगे बढ़ा करके, और उससे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता है, या उसको कैसे रिकॉग्निशन मिले उस पे अपने मतलब आइडियाज रख सकता है। और दूसरा जो लैब में गए हैं, तो लैब में जाकर के उन्होंने क्या सीखा, उसको आगे फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यस सर। Thank you. Okay, so before we go to the students and also their project, we'll invite Himanshu. Himanshu, Dr. Murli Manohar, please. यस यस सर। यस सर। हिमांशु फाइनल ईयर स्टूडेंट है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू का, और वो इस साल फाइनल ईयर मतलब पास आउट हो चुका है, पास आउट स्टूडेंट है। और उसका वो बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही एक्टिव इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल में बहुत ही एक्टिव इनोवेशन एम्बेसडर रहा है इंस्टीट्यूट का, इनोवेशन कोऑर्डिनेटर रहा है, और बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज करवाया स्टार्टअप से रिलेटेड, इनोवेशन से रिलेटेड। साथ ही बहुत सारे कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट किया, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल कंपटीशन में, इवन स्मार्ट इंडिया हैकाथन में वो गया था। फिर एक बार आईआईटी दिल्ली गया, इसी तरह मतलब स्टार्टअप पिचिंग कंपटीशन के लिए। इसी तरह युक्ति इनोवेशन चैलेंज में भी जो है फर्स्ट राउंड उसका हो चुका है, सेकंड राउंड का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इसी तरह बहुत सारे कंपटीशन में जब भी उसको मौका मिला वो पार्टिसिपेट करता रहा, बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट है। और अभी फाइनली वो पास आउट होने के बाद जो है उसको ओपन कैंपस में माइक्रोन में प्लेसमेंट हुआ है। माइक्रोन एक मल्टी एमएनसी कंपनी है, यूएस बेस्ड एमएनसी कंपनी है, और अभी
इंडिया में भी वो सेमीकंडक्टर और डाटा सेंटर बनाने के लिए बहुत सारा उसका प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसके लिए वो हायरिंग कर रही है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन टू हिमांशु एंड नाउ हिमांशु। Thank you, sir. So as sir said, I am Himanshu Kushwaha. I am from Electrical Engineering Department, Government Engineering College, Palamu. Basically, I was placed recently at Micron Technologies, which basically manufacture memory-based semiconductors like RAM, DRAM, SSD cards, etc. Um, it was a open recruitment held at Ashoka Institute of Technology, Varanasi. Overall recruitment process was a three-stage process in which first I had applied through LinkedIn at the for this job opportunity. After the resume shortlisting process, I was invited for written test and interview at the institute. I around there were around like 650 students who have participated on that interview, and out of that 600 students, about 50 students have been selected for the interview round. It was after the interview, it was in the ratio 1:5, that out of 5 students, one will be like selected. So I had cleared the interview round. Talking about the first stage, which is the resume shortlisting stage. In that, I think the ATS score is very important. One should have a very good ATS score of about 80 85 plus. I had made my resume through Overleaf. The ATS score is like very good for resume initial resume shortlisting, because these are done through AI. You should have a very good ATS score. After that, written test was very easy. It was basically English reasoning, and basic mathematics, 10th level. At that time, the cutoff was 17 marks, and I had just scored 17 marks. I had scored 17 marks, and cutoff was 16 actually. 16 was the cutoff. And talking about the main part, which is the interview. Interview was like one-to-one technical interview. There were no HR round. Interviewer was were basically focused on what practical things you have done in internship and your project, nothing more than that. There, what question they have asked me at first, why you have done internship at that particular organization, and what practical knowledge you have gained from that. So Initially, I had done my internship from JUSNL, Rela Grid. Then, in the second phase of internship, I had done it from National Institute of Advanced Manufacturing Technology, as well as in Power Grid Corporation of India Limited. When they have seen I had done an internship at Power Grid, they were like, you have just gone for 1 week, so you have done. So it was just like a formality. They were like, if you are doing, they had like commented that if you are doing internship, you should do from somewhere where you can get some practical knowledge, not just for formality part. I had done my internship quite well at NIFT Ranchi. I had talked mostly about it. I have done a project there also in predictive maintenance of submersible pumps. There were questions on what I have done, what is the need, and what was the cost of that project, etc., etc. And there is a real life question that if there is accelerator, how you can do the predictive maintenance of that accelerator in that. There were basic questions on that what are the various parameters you will check, etc. And then talking about my project, they were very interested in my project of DCRM, which was based on the AI based analysis of circuit breaker. I had done the project in quite long from SIS, since it was a problem statement of Power Grid only in SIS. So I was doing it from that period. I was like able to answer my question.
They were not very like tough question, but whatever I had done, for example, circuit breaker. So I had done in SF6 circuit breaker. So why you have chosen SF6? What was its KV rating? What was the cost of experimental setup? What is the experimental setup? What is the value of voltage, current, etc. There was a very simple question also, that how you can measure 220 kV through ammeter. So it was one simple question, and then where I had got stuck is like they had asked whether you have qualified or gate or not, or whether you wanted to pursue higher education or not. So and at that point I was not able to like give quite a well answers. So this was the overall process. It was on 13th June, and on 17th 18th June I had received the provisional offer letter, but I haven't seen the letter. I had seen it like 21 or 22nd June. Although I haven't joined Micron, I was preparing for Gate, but it was a very good experience, because Micron is a very one of the best semiconductor companies in the world, and it is leading into memory segment. I really enjoyed the technical interview, which was around 40-45 minutes, and it was quite good experience. Thank you. Okay, Himanshu, Yes, sir. yeah, another say, what you took the entrepreneurship class and you took all this we talked about. So how does that, did that help you a little bit, or that is can you share that with the team? Yes, so basically, one of the most important things is that, I was initially when I had joined the college, I was not able to speak in public or speak somewhere else. At present, also, I am not like perfect, but I can say whatever means I have in my mind. So, entrepreneurship class, first of all, it gave me a platform where I can express related to my projects initially. So it was a platform. Second one is like a problem. Uh, if if uh, if I had received some problem statement, how to tackle that through the bunch of problem statements that I had solved throughout my whole 4 years, various projects I had worked on. So, with the help of this entrepreneurship class, I can whenever there is some new questions that how we can tackle that. So it has given a experience to me. Yes, sir. Can can you share this the latest part which we talked about, the the economy has changed and now the economy is creativity and curiosity. Were you able to use that in your interview process? Um, so I am not actually getting what you are asking for, Oh, I see. Okay. but जो जो अभी जो हम लोग जो सीखे ना कि बी क्यूरियस, जिज्ञासा होनी yes, sir. चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, Yes, राइट? और yes, sir. and then creativity. So, so I'm sure because what you told me just now, that Yes, sir. जब आपसे सवाल पूछा गया तो आपने you answered that very well, कि जब some problem statement में you did a good answer there. And so वही मैं पूछ रहा था कि जो अभी जो creativity है और ये जो curiosity, uh, did you use that did you use that word in your interview? It's not so exactly curiosity word, but as you have told, due to the curiosity only, so I had participated on such events, or Absolutely. since No. I am curious that I had done also my internship from NIPS, since I was curious. I had Yeah, also participated. I had, yes, sir. Due to curiosity only, sir. I had like absolutely. Very good. So, Himanshu, that's the answer I expected from you.
वही जो बोले ना कि सर क्यूरियोसिटी और ये क्रिएटिविटी नहीं होती तो मैं कैसे जाता इंटरव्यू में, माइक्रोन से कैसे पूछता. Yes. वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई थिंक दैट्स अ गुड. ओके, और प्रोफेसर रॉय, यू वांट टू से, एंड देन आई हैव द स्टूडेंट्स आस्क देम क्वेश्चन, आस्क हिमांशु क्वेश्चंस. प्रोफेसर रॉय. Well, I just want to emphasize what Himanshu said. The most important thing that you'll be asked in interview is about the projects that you have done, about the issues and challenges in the project and how you overcome them. Because this is the way that you will be able to express that in future, when you join a company, there will be problems that will be coming up and how you are able to handle those problems. So this is very important, and इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सारे नोट्स को ठीक से रखिए आपने जो इंटर्नशिप की है, because that is going to play a very important part. सारे questions will be based most probably about your internship rather than the knowledge that you have gained in your institute. Knowledge is good enough for you ताकि इंटरव्यू आपका आ जाए. I mean, you are selected as one of the candidate. अगर बोलते हो जैसे हिमांशु ने बोला ATS is about 80%, तो it becomes more challenging अगर आपका ATS उससे कम है, because the chances are you might not be called even for an interview. आपका selection ही नहीं होगा उसमें. Times are very tough. अब आपको you have to score good score and then be attentive to the questions that are being asked. आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दीजिए. अगर आपको नहीं आता है तो आप बोल दीजिए सर आई डू नॉट नो. अगर डोंट ट्राई टू बिट अबाउट द बुश, क्योंकि दे नो दिस आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. इसीलिए बी डायरेक्ट. अगर आपको नहीं आता है तो बोल दीजिए सर मेरे को नहीं आता है, बट आई मेक श्योर दैट आई लर्न ऑल ऑफ दिस. सो हिमांशु, गुड जॉब, कंग्रेचुलेशंस. Thank you, sir. Okay, students, raise your, whoever has a question for Himanshu, please raise your hand. And Dr. Murli Manohar, if you want to say, you ask a question to Himanshu. Well, by the time students prepare a question, I just want to tell a story about my experience. एक दिन मेरा बॉस मेरे पास 300 रेज्यूमे लाके मेरे डेस्क पर रख देता है. बोलता है सुरेश, I was supposed to go and take interview in this institute. Unfortunately, there's something else that has come up. इसीलिए आपको कल जाना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूट में और you have to take interview. इसीलिए go through this resume and select 40 out of this और उनके वहां पर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दो that these 40 students must come for the interview. अब आप सोचो 300 resume and I have just 4 hours to go through them. मैं क्या करूंगा? First of all, अच्छा GPA, because you want the best candidate. GPA या जो हिमांशु ने बोला ATS is something that can be measured, right? If you have a good one, most probably you're better than others. So सबसे पहले you sort it out according to your GPA. फिर उसके बाद what projects that they have done related to our department. So quickly just glance and जिसने नहीं किया to our requirement उसको हटाते. And in the end, I was able to come up with about 25 resume. मैंने 25 की list भेज दी वहां पर. Next day, all 25 were ready to come for the interview. मैंने उनका इंटरव्यू लिया and they were so excellent students. अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था इनमें से मैं किसको सेलेक्ट करूं किसको नहीं करूं. And they told me इसमें से आप 4 को यहाँ पे बुलाएंगे. मैं जब वापस आया, I told them that these are the 10 students. Sorry, I cannot list को मैं कम नहीं कर सकता. And I invited 10 of them to come for interview with the department, जहाँ पर department की deployment होगी. And they all turned out to be really good students. तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब आप resume लिखते हो,
your resume must cater to the need of what has been advertised. आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. Focus should be more. अगर मैन्युफैक्चरिंग का टाइप जॉब है तो आपको you have to focus more on manufacturing. अगर डिजाइन रिलेटेड का जॉब है you have to focus more on design. So that is how the resumes are really looked into. So now you have the experience how I reduced from 300 to less than 40 and selected 20 students from that. क्या process होता है? How to really be, how to shine in an interview. अगर आपका इंटरव्यू अच्छा होगा आपको पैसे भी अच्छे मिलेंगे. Because think one thing, there are students who get 40 lakhs compensation. There are students who get 6 lakhs, 7 lakhs, 8 lakhs. जो 40 या 50 जिसको मिलता है उसको इतना पैसे क्यों मिलते हैं? He is not 10 times better than others. Absolutely not. I don't believe that. Neither he is going to be 10 times productive than the second student that they hire. No. Lekin, what they see in this student is that there is a perfect fit and he is going to be an asset for the company in the next 5 years. हम लोग के यहाँ पे भी hiring जब होती है, there are some candidate that they hire with the view that he's so good that he's going to become a VP after 4, 5, 6 years. And then they really mature him to become a VP. Easily, some of these who get really high salary based in the startup job, they are the students who are going to be the core of the company in future. That's the difference. And once you're able to do that, you'll be able to make tons of money. Manish, I hope I answered your question. जो हम लोग का ये session रहा, basically was all around internship and how you're going to benefit the most from this internship. शुरू में हम लोग बता दिया था, the internship is very important because this is what is going to open a floodgate for you into an industry. Sir, one question is in the chat box. How to make a good art-friendly resume? How to make a good resume? Okay. The best way is, जैसे मैंने आपको बताया कि your resume should be catered to the opening. किस चीज की डिमांड है, किस चीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर उसके आप वर्ड्स पढ़ लीजिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और उस जो भी वर्ड्स उन्होंने यूज किए उस वर्ड्स को आप अपने रेज्यूमे जरूर डालिएगा. Because when your resume will be scanned either electronically or by an HR, these are the keywords that they'll be looking at. अगर वो keywords नहीं रहेंगे, unfortunately, your resume will go in a different stack. I hope, Abhiram, I hope that is clear what I said. सर अभिराम, एक तो आपने जो रेज्यूमे में ये लिखना जरूरी है कि आपने कॉलेज में क्या किया है, लैब में क्या किया है, और लैब में क्या आपने किया था, क्या चैलेंज था, और अब क्या सीखे हैं उससे. सो एक ये चीज रेज्यूमे में लिखना, किसी भी रेज्यूमे में ये लिखना जरूरी है. और जो भी जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो आपको कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा, यू मेंशन that in design of whatever the design you're doing or whatever process you're developing. So, and I'm sorry, तो आप एक
काम कीजिए, just go to go to your chat GPT and tell it, say how to write a good resume for a graduating student. आप लिखिए, my name is this, I am in this college, and this is my branch. I'm in the 6th semester or 5th semester, wherever you are, or 8th semester, and then uh, I want to write what should be the content of the resume, and it will give you that format very easily. तो जो हम लोग जो बात किए प्रोफेसर रॉय जो कहे, it will have that. I can look at the question and answer that question. That should be, if I will write everything about activity, it becomes too long, like 2 or 3 pages. No, it will not be. आप एक एक लाइन लिखिए, एंड जैसे प्रोफेसर ने बताया, you can go back and tell AI to make this a short version of my resume. वो एक पेज में आपको बना के दे देगा. Try it, है ना. आपको डिफरेंट मेथड आपको सीखने पड़ेंगे. एंड अगर ओपनिंग अगर मार्केटिंग में है और आप अपना लैब का एक्सपेरिमेंट लिख रहे हैं, इट विल नॉट बी वेरी हेल्पफुल. इट विल बी हेल्पफुल कि आपने जो जॉब और असाइनमेंट किया है, हाउ डिड यू मार्केट द प्रोडक्ट, आपने प्रॉब्लम्स कैसे ली, कस्टमर, यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कस्टमर, यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कॉस्टिंग, you have to start talking about all that. इसीलिए मैं बोलता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, those are the words that you are going to use. Right? So maybe maybe one of the in the one of the coming session, I will announce, and maybe we will do how to write resume. That but if you are curious and creative, then do what Professor Roy said just now. And I tell you, you'll get much more better because you'll have something in writing, and you can understand that much better. Okay. आप maximum आप लिखिए what you have done in your 5th and 6th semester. Don't start writing down from 1st to 4th semester because that does not make sense. आपके real engineering और उसकी application जो है is being learnt in your 5th and 6th semester. Yeah. And it has to be just one page. Don't let it be more than one page. मैक्सिमम है कि एक ही पेज में लिखने की जरूरत है. उसके बाद आप अटैचमेंट दे सकते हैं, बट द रेज्यूमे शुड बी इन वन पेज. Okay. All right. So I'll tell you, maybe I'll start. Okay. Is there a somebody wants to present your project? Piyush, go ahead, please. Yes, sir. In last class, we are discussing about our idea Bharat Career Movers Uh-huh. queue management system in Temple. Yes. Then in our last mentoring session, you asked us very important question: Why would Temple Trust accept your solution? And you also gave us a task to validate our assumption by meeting temple authorities and understanding whether they actually need such a system or not. Mm-hmm. Then we approached and interacted with authorities from multiple temples in Jharkhand to gather a real world feedback. Mm-hmm. Uh, the, and the response was quite encouraging. We found temple authorities are also facing serious challenges in managing large crowd, especially during festival and peak season. They show genuine interest in technology-driven crowd management solution. Sir,
A recent example is Baba Badnath Dham Mandir Deoghar, where temple administration has collaborated with NIT Patna to explore innovative solutions for cloud management. This validates that large temples are actively looking for modern technologies to improve crowd control and safety and the overall pilgrim experience. Okay. Yes, Good, Himanshu. Piyush, that's very good yes, sir. because अब आपने कस्टमर से जाके बात की, and that is very important, and that what you should have done in the first place. But I'm glad Yes, sir. अब आपने वेरिफिकेशन भी कर लिए है, आप इसको solution में लाइए and go back to this temple and say, here is a solution, can you implement this? यस सर, हम लोग बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर वहाँ के मतलब जो अथॉरिटीज के एक पुजारी हैं उनसे बात हुई मेरी, तो वो बताएं कि कैसे मतलब ये प्रॉब्लम को वो लोग हर साल वैलिडेट करते हैं। अभी जो फेस्टिवल आने वाला है सावन, उसमें भी वो लोग क्राउड मैनेजमेंट के लिए बहुत उन लोग को दिक्कत लेना पड़ता है। और वहाँ के एसपी के साथ जो है वो हम लोग एक मीटिंग रखने का सोचे थे, लेकिन वो भी हो नहीं पाया। नेक्स्ट वीक शायद शेड्यूल हो पाए, तो वो बताने वाले हैं कि कैसे मतलब वो लोग इस प्रॉब्लम को मैनेज करते हैं वहाँ पे, और हम लोग अपना सोल्यूशन भी उन्हें बताने वाले हैं। बाकी हम लोग ने टेम्पल अथॉरिटी को अपना सोल्यूशन बताया तो वो लोग को अच्छा लगा। Piyush, you have to have two people in your team. Remember, it's the team that really matters. एक तो आप district magistrate जो है, because यस सर। he controls the whole district. उनसे, and by the way, they are very friendly. आप don't try to run away from them because ये solution उनके लिए भी है. It will make their job simple. तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दूसरा पुलिस का मजिस्ट्रेट, आप दोनों से बात कर लीजिए, यू विल फाइंड दैट योर solution will become more easier to implement. और इन दोनों को आप अपना वो बनाइए, मेंटर बनाइए. यस सर। Okay, because with a good mentorship the project is half done. ओके सर। Good job. I would really like to hear from students who took grassroots internship. The more I think about it, the more excited I get. Yeah, they are really not only identifying a problem, but identifying a crude solution to the problem, which you can modify, enhance, and and take it to a larger scale. तो जिन बच्चों ने grassroots level पर काम किया है, were you able to identify jugaad, sort of a jugaad which was trying to improve the problem that they were having? That is why the jugaad is there. और उस जुगाड़ को आप you just modify, polish it, make it into a product, and go and implement it on a larger scale. Let me ask यस one. सर, Yeah. I am also doing grassroots internship. My village panchayat is Kanke Arsande village. अच्छा, अपने आप को आइडेंटिफाई करो, अपना नाम बतलाओ और कौन से कॉलेज Piyush, से. I think it's Piyush who's talking again. Piyush, Yeah. बताओ My name आपने is क्या किया? Pandey, government in Palamu. Yeah. Okay. विलेज विजिट के ड्यूरिंग तो हम लोगों ने मतलब जो जो नोटिस किया है, एक्चुअली जो हमारे जो विलेज है ना वो सेमी अर्बन हो चुका है। मतलब वो प्रॉपर विलेज रहा नहीं जो विलेज हम लोग को अलॉट हुआ है। Mm-hmm. तो पहली बात तो वो मतलब पूरा डेवलप्ड हो गया है, तो वहाँ पे हम लोग को कुछ वैसा कल्चर दिखा नहीं विलेज का। Mm. और मतलब जो वहाँ पे बस एक वहाँ जो ट्रेडिशनल चीज हम लोग को देखने को मिला, जैसे कि वहाँ का एक फेस्टिवल है मांडा पूजा आदिवासी लोगों का, जिसमें वो लोग आग पे चलते हैं और शिव भगवान की पूजा करते हैं। Mm. दूसरा एक 1860 का एक टेम्पल दिखा, मदन मोहन मालवीय मंदिर, Mm. जो कि बहुत फेमस है और जेपीएससी के सिलेबस में भी शायद है, वो लोग वहाँ बता रहे थे। वो बहुत हिस्टोरिकल मंदिर है। तो ये दो चीज हम लोग को वहाँ मतलब वहाँ का ट्रेडिशनल ग्लास रूट से पता चला। और तीसरा था कि वो विलेज मतलब कांके मेंटल हॉस्पिटल के पास में था। तो हाँ. वहाँ पे और भी दो मेंटल हॉस्पिटल प्राइवेट खुले हुए थे।
हम्म, जैसे पेरिस। तो वहाँ के हम लोगों ने वहाँ विजिट किया। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उस हॉस्पिटल के, उनसे बात किया। तो वो बताए कि एक कॉमन डिजीज का बारे में बताए थे, जो कि उस एक स्पेसिफिक टाइम में, मतलब कि ये जो मंथ होता है फरवरी टू मार्च या फिर मई, इस टाइम में वो ज्यादा होता है। और सर एक स्पेशल केस हम लोग को वहाँ पे मिला था क्या, कि एक लड़की थी जो नीट का एग्जाम में मतलब अच्छा रिजल्ट ना कर पाने के कारण उसका मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ गया था। तो वो वहाँ पे एडमिट हुई थी। तो ये सब बस एक स्पेशल केस हम लोग को दिखा विजिट विजिट के दौरान। बाकी तो सब एज एज यूजल नॉर्मल ही था। और हम लोगों ने थोड़ा देखा वहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर कॉलेज भी है, तो हम लोग वहाँ भी विजिट किए हैं। तो उस कॉलेज में डिफरेंट प्लांटेशन हो रहा है, वो सब को देखा। ओके। तब पीयूष आपने रिपोर्ट बना के दे दी? ग्रास रूट रिपोर्ट भी तो देनी है आपको। ये सर फर्स्ट फेज का रिपोर्ट सबमिट हो गया है और अप्रूव भी हो गया है। सेकेंड फेज का रिपोर्ट हम लोग बनाने वाले हैं, और एक एक लास्ट विजिट और करने वाले हैं विलेज में। ओके, तो सर मैं कुछ बोलूँ क्या इस पे? गो अहेड। हेलो। या हाँ, गो यस अहेड सर। प्लीज। यस। पीयूष, देखो, नया कुछ मतलब देखो, बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे आसपास जो हमें लगता है कि एज यूजुअल है, लेकिन उसमें भी अगर तुम सही से देखोगे तो कुछ ना कुछ इनोवेशन मिलेगा। ठीक है। तो हमें मतलब देखने का वो मतलब नजरिया होगा कि मतलब किस नजर से तुम देखते हो, तो कुछ ना कुछ तुमको इनोवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि तुम 2-3 गांव विजिट किए और कुछ भी इनोवेशन नहीं मिला। तो मेरा सजेशन है कि तुम अब जो विजिट करो तो मतलब देखो कि क्योंकि अब तो तुम्हें जो है सो फाइंड आउट करना है कि क्या इनोवेशन है। अभी तो सिर्फ विजिट रिपोर्ट तुम्हें बनाना है। ठीक है, विजिट रिपोर्ट सबमिट किए हो, तो अब जो तुम रिपोर्ट सबमिट करोगे उसमें कुछ ना कुछ हमें लगता है कि तुम नया डालो, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ नयापन जरूर होता है। ठीक है। तो बस तुम्हें मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना है कि क्या इनोवेशन, क्या जुगाड़ है, या कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उससे जाकर के सही से बात करो। ठीक है। और मेन बात है कि गांव में लोग बात करने से शर्माते हैं, बचते हैं बात करने से। तो हेजिटेशन होता है उन लोग में, या लोग ऐसे नहीं बताएंगे कि हाँ हम क्या नया कर रहे हैं या हमारे पास कुछ इनोवेटिव है, वो नहीं बताएंगे। ठीक है। तुम्हें उसे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि बातों बातों में पूछना पड़ेगा कि आपका जो ये प्रॉब्लम है उसके लिए आप क्या मतलब अगर इस तरह का होता है तो आप क्या करते हैं। ठीक है। तो तुम्हें उसको फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करके अगर किसी से तुम सिर्फ पूछोगे कि आपके गांव में कुछ इनोवेटिव हो रहा है, तो वो नहीं बताएंगे। ठीक है। तो मेरा सजेशन है कि तुम फिर से मतलब जाओ, 1-2 विजिट करो, और उसके बाद जो है फिर मतलब कुछ इनोवेटिव फाइंड आउट करो। ठीक है। जैसे तुम लोग बहुत अच्छा मतलब एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए कि मंदिर में जाते हैं तो क्राउड में मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम है। ठीक है। तो उसी तरह जो है मतलब तुम्हें कुछ सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है कि अगर किसी तरह का एक यूनिक कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका लोग क्या सॉल्यूशन कर रहे हैं, या उनके दिनचर्या में जो है कुछ ऐसा है जो थोड़ा हट करके है, कुछ इनोवेटिव है। ठीक है। जहाँ लोग जिसको फॉलो नहीं कर रहे हैं हर जगह, या उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला है आम चीज, लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, कुछ इनोवेटिव है लेकिन उसको देखने में लगता है बहुत सिंपल है, बहुत साधारण सा चीज है, लेकिन क्योंकि गांव में तो ऐसा नहीं है कि कोई हाँ रॉकेट साइंस चल रहा है, कोई रॉकेट बना रहा है या कुछ
बहुत बड़ा इनोवेशन कर रहा है, लेकिन तुम्हें छोटा से छोटा इनोवेशन फाइंड आउट करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। यस सर, हम लोग नेक्स्ट विजिट में इसे फोकस करेंगे। Good. ओके। Okay, very हाँ good. हाँ, दुर्गा कुमारी, दुर्गावती कुमारी। अच्छा सर, इस पे आप और सर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, बस दैट्स आई थिंक वी लाइक टू हियर, जैसे आपने दुर्गावती, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, और अनुराधा शाह और आदित्य वत्स, we're going to call everybody and see if you want to share something. Good morning, sir. Good morning. Sir, my name is Durgavati Kumari. I am pursuing BTech in Electrical Engineering from Government Engineering College, Palamu. Mm. I recently completed internship on fault diagnosis in multi-level inverters under an NIT professor and PhD mentor. Sir, I would like to share my internship experience with you. Mhm. During my internship, I learned about multi-level inverters, MATLAB Simulink, and fault diagnosis technique. I worked on creating different switch fault condition, analyzed the output waveform, and practical knowledge of power electronics. At first, I faced challenges in understanding AI algorithm and simulation result, but with practice and guidance from my mentor, I overcome them. This internship improved my technical knowledge and teamwork skills. Sir, I would like to express my sincere gratitude to Professor Murli sir for his constant guidance and support throughout my internship. He patiently guided me whenever I faced technical challenges and encouraged me to improve my understanding of the project. His valuable suggestion and motivation helped me successfully completed my internship. I am truly thankful for his mentorship and support. Sir, I have a question from you. Sure. I have developed a strong interest in power electronics and renewable energy. What should I learn next to build a successful career in his field? In this field, sir. Professor Roy, you want to take that? Well, renewable energy, you can see the whole world is focusing on that. तो जो चीज आप सोच रहे हो, there's a lot of future that lies. अगर आप सोलर की बात करोगे, right now the efficiency of solar panel is I think 28 or 29%, which means only 29% of solar is actually converted into electrical. अगर सोलर पैनल की अगर आप efficiency 30 या 35 कर लोगे, you will look like a champion. I mean, you will have one of the greatest companies in the world अगर आप उसकी efficiency बढ़ा दो. So there are a lot of good work that can be done. Number two is power storage. These days, even the biggest electrical companies are deploying batteries to store power. And power storage is becoming more and more common. तो अगर आप बैटरीज के ऊपर भी काम करोगे, again, that is going to be a nice future for you and of course for technology also. तो आप इन दो चीजों में काम कीजिए, you'll be very successful. So, Durgavati, one of the things you want to do कि आपको क्या अच्छा लगता है, किस चीज पर आप यू गेट एक्साइटेड कि वाह, इमोशनली, और वाह, दिस इज व्हाट आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर. सर, मुझे मैंने इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं जो भी मैंने पढ़ा है सर, उसे रियल वर्ल्ड में कैसे यूज किया जाता है, ये सब मुझे पसंद है सर. रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाए. या सो यूटिलाइज किया जाए, या कैसे उसको, एनर्जी को कैसे क्रिएट किया जाए.
सर सर कैसे क्रिएट किया जाए? ये कहने का मतलब है ना तुम्हारा, राइट? दिस इज, yeah, so that's very good. So you have to, Professor Roy just said very good thing actually, क्योंकि अभी वो गाड़ी रुक गई है। तो गाड़ी रुक गई है जो एफिशिएंसी की, इतना बड़ा पैनल है और एफिशिएंसी सिर्फ 28-29% है, यस सर। right? So that's one. Then look at the windmill, right? कितना उसमें कितना how much energy is wasted there, or how much is produced, and what is the efficiency. You look at, so ये आप, this is a very good field. This is a, and demand will keep on going, क्योंकि एनर्जी की कमी हर जगह है। यस सर। और फिर अभी थोड़ा सा जैसे अभी जो हार्मूज स्ट्रेट में जो हुआ है, राइट, ईरान के साथ, तो सारे दुनिया में तकलीफ हो गई है हर, क्योंकि एनर्जी, बहुत एनर्जी के कारण ना, क्योंकि जितने भी जो आते हैं, ऑयल आता है, वो तो वो एनर्जी में यूज होता है मोस्टली, राइट? दिस इज सो, अगर वही एनर्जी आप बना दें, जस्ट सो सोलर एनर्जी, एंड देन दूसरा जो प्रोफेसर रॉय ने कहा कि बैटरी बैटरी जो है, बैटरी क्या करते हैं कि किलोवाट आवर्स पर यूनिट एरिया, यस सर। तो कितने कम से कम 1 किलोवाट आवर के लिए कम से कम क्या साइज बैटरी का होना चाहिए, छोटा से छोटा। But that's where the metallurgy people would be able to help you out, right? You work with them, you as an electrical person, and then get the, but you think about this, okay? This is because you're smart enough, and I think ये जो बैटरी बैटरी के साथ साथ ये सोलर एनर्जी जो है बैटरी के साथ, बिकॉज बैटरी में अगर ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकेंगे, अब जैसे प्रोफेसर रॉय के पास कार है, अब उनकी कार की बैटरी है जो दैट टेक्स लाइक 300-400 miles actually, one charge, but and it is, the battery size is bigger, but what if the battery size is made smaller, तब तो वही कार 800 मील चली जाएगी, दैट्स बिकॉज नाउ इट्स, बैटरी बहुत हैवी रहती है। सो एनीवे, दैट्स दोज आर द थिंग, वो सोचते रहो, स्टार्ट ड्रीमिंग अबाउट इट, रात में सोचते थे कैसे how would I increase the efficiency of the solar panel, how would I change the chemical, the metal, the material, so that यूनिट एरिया में, क्यूबिक यूनिट क्यूब में मैक्सिमम आप स्टोर कर सकते हैं। okay? So Durgavati, one more thing is, next time अगर आप internship लो, take internship in a renewable energy company, and वहां पर आपको बहुत experience मिलेगा। Remember, you don't have to start your own thing immediately. उसके लिए you have to become an expertise, और expertise बनती है from knowledge, either through books or through practical experience. तो आप दोनों लोग work in a company for about 2, 3, 4 years till you feel very comfortable understanding the technology, understanding what it takes to improve things. और जब आप उस कंपनी को छोड़ के आप अपनी कंपनी बनाओगे, your company should be better than the company that you're working in. Only then you'll be successful. तो ये चीजें आप ख्याल में रखिएगा कि you don't be in a hurry to start your own company. आप नॉलेज गेन कीजिए, आप एक्सपर्टीज गेन कीजिए, आप टेस्ट एंड मेजरमेंट के नए नए जो इक्विपमेंट होते हैं उसकी यूसेज आप कीजिए। आप देखिए कि वहां पर कौन से अच्छे आदमी हैं, who are the good people that you want to take along with you when you form a company. तो ये सब चीजें तभी मिलती है when you gain
practical experience in a company. और वहां पर आपको एक मेंटर मिलेगा. Make Okay. him a mentor. All right? Yes, sir. Okay, sir. Sir, one more question I have. बोलिए. Sir, how an internship help in building a successful career and what impact it has on a student future? अरे ये तो हिमांशु ने अभी बता दिया आपको, right? You heard what Himanshu said. कि सारे क्वेश्चन जो उससे पूछे गए थे were related to his internship. And अगर आप इंटर्नशिप सीरियसली करेंगे, अगर आप इंटर्नशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, then you will know what are the issues, what are the challenges, how you overcome those challenges. And these are the conversation that you want to bring in your interview. Remember, आपकी knowledge should not be only knowledge of academics, but your knowledge also should be how you can adapt that academics into real life. And you learn that through internship. Isliye internship is very important. It is a gateway to get into a job. If you have good internship, पूरे notes लिखिए, पूरा data collect कीजिए, because that is the homework that you need to do. Okay, Durgavati? Okay, sir. Okay. And same thing, this goes for all the students actually. आप internship को बहुत seriously लीजिए. Don't take it lightly. Internship is very important for you. Okay, so the student, the time has come. The class time is almost over. And we will take just one more question. Whoever has that question, you can ask. We'll give just 1 minute. If we don't hear within 1 minute anybody raising hand, then we will close the class. And while you're deciding, I want to say that it takes a lot of effort and energy to put this kind of session together. And first of all, I want to thank Himanshu. Thank you so much for taking the time out to share your experience. And I would love to have you share that experience again after 2 or 3 months in the entrepreneurship class, the regular class. Okay, thank you so much. Again, and then I want to thank Professor Suresh Roy. Professor Suresh Roy, your experience, your manufacturing experience, your the experience in Japan, experience in China, in Singapore, in Hong Kong, and all those things, that has been very helpful in what you have shared. We really thank you so much. Dr. Murli Manohar, the success of these programs is actually it is because of you. Thank you so much, and your vision, your thought, and your commitment, which from your students, I see that is excellent. And then, of course, we have Shivraj Kumar from the Jharkhand University, JUT. He was very helpful. Dr. Ashwin Mato, very helpful. Dr. Prakash Kumar from BIT Sindri, head of the Department of Production and Industrial Engineering. Very key person. You might like to go there and talk to him. Excellent. And Dr. Murli Manohar can help you getting in touch with him. And then Professor Raj Jaswa, we always talk to him, and he is very helpful in the regular class where he will be talking to the students. So I see. So thank you to each and every faculty member and the professor and the students. I want to ask a question. Ayush, please go ahead. Unmute yourself. कि अभी तो मेरा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हम सेकंड सेमेस्टर में जैसे इंटर्नशिप अभी तो बीआईटी से किया है,
तो हम सेकेंड ईयर से मतलब फोर्थ सेमेस्टर में हम इंटर्नशिप कहाँ इंडस्ट्री से करें कि कोई ये कॉलेज से? Always with the industry. क्योंकि I'll tell you why. कॉलेज की जो भी labs हैं, perhaps they are 5 to 10 years less than what is in the industry. तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे ऑल टुगेदर, वहां का जो टेस्ट एंड मेजरिंग सिस्टम है विल बी एंटायरली डिफरेंट. तो if you have a choice trying to go for industrial experience rather than college lab experience, because that is going to be exactly like your college too, except that they might teach you something more. It's more educational, but it's not giving you that experience. आप कोशिश कीजिए. You are in the second semester, you have a long way to go. अच्छा रहेगा if you try to get internship every year in different industry environment. Then you will have a good feeling of where is your interest, and that is where you like to go. All right? यस सर. सर जैसे कि जैसे हम झारखंड के में है तो झारखंड से हम जैसे बाहर जैसे कलकत्ता इस सब साइड तो हम लोग इंटर्नशिप करने तो जा सकते हैं एनओसी लेके? कहीं पर भी internship कीजिए, it really doesn't matter. As long as you are gaining really good experience. आप वहां पे सीख रहे हो, एंड आप सीखोगे तभी जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. अगर वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही और आप सिर्फ नोट्स लिख रहे हो, दैट इज नॉट रियली एन इंटर्नशिप. तो आप देखिए जहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले टू परफॉर्म, टू डू एन एक्सपेरिमेंट, टू कलेक्ट डेटा, टू रिपोर्ट समथिंग, उसमें आप चाहिए. ऑलराइट? Thank you. यस सर. I want, yeah, thank you so much. All right. Okay. That was a good question. Okay. I like to hear from uh, from REC. So Kumari Neha or Kumari Neha or anyone from the REC. Can you unmute yourself and share your experience about about this class, about this session? All right. So I want to share that we will continue the 6th semester advanced entrepreneurship elective class starting July 18th. And so every Saturday at 9 a.m. we'll have that class. Okay. And that of course will part of it we have completed already. And now so make sure you attend that, because I will also announce at that time I'll share the course content, what we have covered, and what we are going to cover before the second midterm, and what we are going to cover till the rest of this rest of the semester. Okay, so make sure that you attend that class, because we'll continue that. Okay. I just want to thank you everyone, and special thanks to all the professors. Special thanks to Dr. Murli Manohar and Professor Suresh Roy. Oh, so with that, I'm going to say have a wonderful, wonderful day today. Enjoy yourself and ask questions. If you don't ask questions, you will not learn. So जिज्ञासा जो है, कुछ सवाल पूछते हैं इसीलिए कि आप में जिज्ञासा है, और अगर आप सवाल नहीं पूछते हैं तो इसका मतलब आप में जिज्ञासा नहीं है, या उस जिज्ञासा को आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं. जिज्ञासा है लेकिन आप उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं. तो जब तक आप व्यक्त नहीं करेंगे तब तक जो इंटरव्यू आपका ले रहा है उसको कैसे पता चलेगा.
Okay. With that, I'm going to close. Dr. Murli Manohar, your last comment, and we'll close after that. थैंक यू सर। तो सर ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। मुझे लगता है जैसा हिमांशु ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो इस क्लास से सीखा कि मतलब क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी वो कैसे उसको हेल्प किया। इस क्लास में वो बोलना सीखा, अपने बात करना सीखा, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना सीखा। तो इस तरह जो है, और यही चीज जो है उसको उसके लिए बेनिफिशियल हुआ इंटरव्यू में। जब वो इंटरव्यू में गया तो वही चीज सब क्योंकि जितना भी वो प्रोजेक्ट किया था, ही हैज डन ए मल्टीपल प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 2 and 3 years। सो और हर प्रोजेक्ट में वो कुछ न कुछ सीखता गया। और प्रोजेक्ट इतना सारा क्यों किया, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी था उसके अंदर में कि इस प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। और वो लास्ट ईयर मुझे याद है कि जब वो इंटर्नशिप में गया, तो यहाँ पावर ग्रिड में इंटर्नशिप के लिए गया, तो वहाँ एक ही दिन विजिट करके और फिर वो चला आया। बोला कि सर वहाँ तो कुछ मतलब अधिक कुछ बता नहीं रहे हैं और कोई है भी नहीं बताने के लिए। तो फिर वो तुरंत मतलब सोचा क्या कि अगर मुझे यहाँ जाकर के अधिक बेनिफिट नहीं होता है, या जो भी बेनिफिट होगा वो 1-2 दिन में मतलब मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन का काम था, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। और जो भी इक्विपमेंट था वो ऑब्जर्व किया वहाँ। उसके बाद वो बोल रहे थे कि हर वीक में एक दिन आना है। तो वो एक दिन जाने से अच्छा सोचा कि मैं ये निफ्ट रांची में एक कॉलेज है, तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो वहाँ जा करके और वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। जो जिस प्रोजेक्ट पे वो वर्क किया, वो प्रोजेक्ट भी उसके लिए मतलब इंटरव्यू में उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए उससे, क्योंकि वो इंटर्नशिप के दौरान वही प्रोजेक्ट किया था वो। और फाइनल ईयर का भी प्रोजेक्ट वो बहुत अच्छा किया। हम लोग के पास मतलब बहुत अधिक, क्योंकि वो भी पावर ग्रिड से का ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, और वो पावर ग्रिड में गया था 1-2 दिन के लिए। तो वहाँ उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी उसी को लेकर के वो वर्क करना शुरू किया। DCRM, डायनेमिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट के कंडीशन मॉनिटरिंग को लेकर के, या सर्किट ब्रेकर के कंडीशन मॉनिटरिंग को लेकर के उसका प्रोजेक्ट था। वो फाइनली मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। और मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि सर उसका मतलब एक रिसर्च आर्टिकल भी वो लिखा इस प्रोजेक्ट पे। और अभी उस रिसर्च आर्टिकल को हम लोग IEEE ट्रांजेक्शन ऑन पावर डिलीवरी में सबमिट किए हैं सर, तो Good. पब्लिकेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को क्यूरियस और क्रिएटिव होना चाहिए। आप जितने क्यूरियस होंगे, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी उतनी ही अधिक होगी। तो आप क्वेश्चन पूछिए, आपके अंदर जो भी क्वेश्चन है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, आप क्वेश्चन पूछिए और अधिक से अधिक अपने थॉट को रखिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो इंटरव्यू में कैसे, अगर यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो इंटरव्यू में तो एक्सप्रेस करना और भी दिक्कत है। तो क्योंकि वहाँ पे और भी आपके ऊपर प्रेशर होता है, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए और अधिक से अधिक बेनिफिट लीजिए इस क्लास का। क्योंकि हमारे पास जो एक्सपर्ट हैं, रमेश सर हैं, सुरेश सर हैं, ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन, और उन्होंने पूरा लाइफ टाइम मतलब गुजार दिया। और पूरे लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आप जो है आपका जो भी डाउट है वो आप पूछिए। जो भी प्रॉब्लम है, इंटर्नशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपको स्टार्टअप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जो भी सोसाइटी में जो भी आपको प्रॉब्लम दिखता है उसके उसके ऊपर बात कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। थैंक Thank यू you. सर, थैंक यू सुरेश सर फॉर योर टाइम। Thank you. Thank you so much. And students, have a wonderful Saturday.
enjoy yourself and just remain curious and remain creative. भारतवर्ष को आगे Thank you. बढ़ाना आपकी सबकी जिम्मेदारी है, and I know you Yes. can